beginning a lecture. Bismillahirrahmanirrahim. This is the first class of business economics. We are going to talk about, first of all, the course outline. We'll be discussing that what actually we are going to cover in this course and what are the contents of this course and how this course will progress over the time and what kind of assessments we will be having during the semester and how you will be assessed during the semester and after the semester, because we have got some kind of assessments that we shall take and give you during the semester, and some of the assessments we will do at the end of the semester. So this particular course is about business economics. This course is also called as managerial economics or economics for managers or like something like that. So there are different names of this particular course. This course is offered in different names. This can be called the business economics. It can also be called the managerial economics. It can be called a different kind of this is like economics for businesses. So they are all different kinds of names that you basically have for this particular course. All right, so this is one of the core courses that is being offered for your program. This is your semester 1, the credit value or the credit hours that you get for 3 for this particular course. We don't have got any prerequisites. You are not supposed to know anything before this, but somehow you have got PGD degree and you have got basic knowledge of economics. That will be a plus for your understanding of this particular course. Now, why this course? आपके ज़हन में, I don't know basically what you have come up with, what kind of questions you would have in your mind about this particular course. कि कैसे ये, like how are you going to, what are you going to learn in this course, and what exactly will be the studied in this? I'll be explaining you that in a moment. But as far as the objectives, the main objectives of this course are concerned, we are going to learn, about the different kind of economic theories that you need as a manager to understand economics of organization and business decision making. So you will be learning different kinds of economics, economic theories that you are going to use to apply on organizations that you are working with, and that will help you in your business decision making, and I'll be telling you how that will be helping you in business decision making. After doing this course, you should be able to apply basic economic principles for managerial decision making process. So for the managerial decision making, you can basically, this is a bit typo here. So you can apply this for your business decision making. And similarly, if you just look at the course learning outcomes, upon completion of this course, you will be able to understand and apply supply and demand analysis to relevant economic issues. Generally when you ask people what do you think what economics is, they generally talk about that economics is about the supply and demand analysis. And this is right to some extent, because whatever decisions we take in the markets or anywhere, they are dependent on some kind of supply and demand mechanisms. So we'll be learning that how the supply and demand mechanisms are important, and we shall be also learning the marginal analysis, which is important in the decision making. What does this marginal analysis means? I'll be telling you, and we shall be learning about the understanding and the causes of consequences of different market structures. You operate in different market structures, and you will be doing this in the particular way. Generally, the mode of delivery will be the student-centered learning. Continuous assessments will be conducted for revision, and we'll be assessing you through midterm exams, class participation, and final exam. And sometimes we shall also be having some kind of assignments and quizzes or something like that. So we will be doing that during the semester, so that you could keep revising the things. So the topics that we shall be covering are related to the basic understanding of economics, and we shall be learning from the managerial perspective. So it should be telling you that how economics can be used for effective management of resources. And then we shall be talking about the market demand curves, the demand and supply mechanisms, and we'll be learning about the market equilibrium, and we shall be seeing that how the price restrictions work and what kind of consequences are there if the government intervenes in the market. By the intervention of the government, we mean when the government decides about the price of something, or the government decides about the behavior of the people. We'll be learning that what are the impacts of the government intervention on different kinds of economic solutions.
And we'll be learning about this applications of demand and supply analysis. And we'll be looking at the production process, that how the firms produce goods, what kind of decisions they take, how they decide about the use of their resources. And then we shall be looking at the market structures. These market structures include a perfectly competitive market, monopolies, monopolistic competition, or oligopoly markets. And we'll be doing that all. The main textbook that you need to buy and that you need to have for this particular course is the Michael R. Bay's book. The book is about this. This is the name of the book is Managerial Economics and Business Strategy. It's a very good book, and you will enjoy reading this. It's a very sweetly written book, which covers very different kind of aspects of managerial economics and business strategy. So we should also be using reference texts, like say, for example, Managerial Economics in a Global Economy. Dominic Salvatore has written this book. It's a very good book. You will be enjoying this book. And if you read this book thoroughly, you will be learning quite a lot of things from this particular book. And similarly, Craig Peterson's book, which is again the Managerial Economics, 4th edition. So you can also refer this book for your understanding of the managerial economics as well. Managerial economics and business strategy. And the first lecture is about the fundamentals of business economics. The fundamentals of business economics. If I ask you this question, say for example, you have already studied economics. When you were coming to this class, what you had in your mind? What exactly were you expecting to learn in this particular course or in this particular class? What were your expectations that this is something that you are going to learn there? And if anybody could share his views. So that we can learn. We always heard and learn about the theories, but the practical aspect mostly missing in our bachelor courses and everything. So that's what we are expecting to learn, like how market works, where we can see the financial markets through this economics, and how I think what we are trying to learn over here, that the practical aspect of Very good. Yes. of these. Yes. Very good. That should be the expectations. And Inaya, do you want to say something? Yes, sir. Yes, this is Inayat or Inaya what? What's your name? Sir, my name is Zaved Khan. Actually, my mobile is got out of order. That's why I got my wife's mobile. So all right, to connect with you. All right. Yes, just go on. So just this is my opinion that the managerial economics and business strategy that which help us to know that if the economy goes and up and down, so what would be the business strategy regarding this, and how could we manage our business and economic challenges to survive through. That's very good. That's very good. Thank you very much for your response. Very good expectations from the course. You are and expecting rightly that you are going to learn something more practical, something more, of course, related to the real world situations. And as I have already told you that you have had your Islamic economics courses already. If you please, everybody could keep their mics off, if they are not talking to us. So it will be good because that can save us from the background noise. Okay, so I have muted everyone. You can unmute yourself if you want to say something. Please feel free to talk. Feel free to raise questions. Feel free to raise points if you want, or you want to talk about something. Please do let us know, if you have got any questions or any kind of concerns or any kind of comments or something. So and if there are many students who want to talk, please raise your hand so that we can get you gradually on this in the sequence of the raising hand, and you can contribute during the lectures. Okay, so economics. This economics was introduced by this particular guy. He was a Scottish moral philosopher and a very pioneering political economist. Before inventions and before studying economics as a separate subject, this particular course was the part of the political science. The political science is about how the countries are run and managed,
and what kind of policies we make to run or organize the countries. So the political economy or the political science is something that basically, you know, like is was also providing the solutions for the economic management. But later on, this particular guy gave a separate status to economics, and he took this a particular segment of this political science and, like, you know, studied as economics and find it as an economics, and this basically he made it popular. And he is like, you know, he introduced this economics through his books: An Inquiry into the Nature and Cause of Wealth of Nations and Theory of Moral Sentiments. The major book he wrote, and which actually gave the foundation to modern modern economics, is The Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations. An Inquiry into the Nature. Now, if you look at these words, that he made an inquiry into the nature. So he's Adam Smith? Yes, Is he's he Adam Smith? Yes, of course. Actually, there's nowhere written his name, so that's why I'm... All right. So Adam Smith. Yeah, of course. I should have written the name, definitely. Okay, so he is the, like, you know, he is the Adam Smith. He's a father of economics, and what he did basically, you know, like he made an inquiry into the nature, that what kind of wealth different nations have, and what are the causes of the accumulation of that wealth into different kind of nations. And if I ask you this question, like, you know, if I want to take, of course, if you think about the countries, like, you know, why some countries are rich and why some countries are poor, you know, like if you look at Pakistan, you look sub-Saharan African economies, there is no dearth of resources. Like as Bakhtavar said, perhaps, like, you know, that the resources, availability of resources make the difference. But, you know, like the if you look at the availability of resources in Africa, like, you know, the Africa doesn't have got shortage of resources. What actually they lack in, they are not able to utilize them properly. Similarly, like, say, for example, if you look at the provinces in Pakistan, you have got 4 provinces, like, you know, you have got Sindh, you have got Balochistan, you have got Khyber Pakhtunkhwa, and you have got Punjab. If you look at Balochistan, say, for example, the Balochistan is the least developed province of Pakistan. But what is your view about the resources in Balochistan? Balochistan is full of resources. Balochistan is full of mineral resources. Balochistan is full of all kind of resources. It's got a big land, and it has got all resources available there. But what actually is making or keeping it, like, you know, behind this whole development process? This is what basically is important, that management of resources, as one of the students said, that how are you managing your resources? How are you executing your plans? How are you basically, like, you know, and if you sum up these all things in one word, the only thing that makes a country different from the other country is the productivity. You know, productivity. People are less productive, like, say, for example, in the developing countries as compared to the people in the developed countries. The developed countries, people are more productive. And what improves their productivity? The productivity improves when they get more education, when they get more training, when they have got better technology, when they have got a better directions or right directions for utilization of their resources. So all of these countries have been able to get these hold of all these things. They have had technology. They have basically trained their people. They have improved their productivity in all ways. So that basically has made them successful, and that basically is something which actually makes them different. And they are more productive than us. Like, you know, if you compare the productivity, like, say, for example, if you compare the per acre yield in Pakistan with the per acre yield in the US, or similarly in other countries, you will find that how productive their lands are and how productive our lands are. Besides all other situations, like, say, for example, the political influence, their financial might, और बहुत अरसे से इन लोगों ने ज़ाहिर देखें ये बहुत ही ज़्यादा they have been so cruel with so many countries. They have been, like, you know, they have just waged war against so many countries. They have taken away a lot of resources from other countries, but still, like, you know, just for just rest, like, you know, rest aside, their productivity of the people is so big. Like, you know, they basically are very productive. Their lands are more productive. Their machines are more productive. Their people are more productive because they have provided them the right technology. They have given them the right education, and they have provided them the right environment. Okay. So economics is about the management of resources.
And if you Sir, use, yes, my please. opinion, this you all said right. Mhm. Yes, please go on. So relying on other things. Actually, so far we haven't innovated anything. Very much true. So that's why if you are, we even can't utilize our minerals to generate a profit or money through this. So that's why we call other people and give them the contracts to profit from that outcome. Very true. That is very true. So No this is doubt a, about I it. think so. This is a major reason that. So this is my opinion that even we do not have, we are our challenges that we are relying on someone else. So that's why this is a major challenges we have. Okay. Okay. Of course, we have got, I told you that we don't have got shortage of resources. What we have got is that we have not been able to utilize those resources properly. That is what basically is the main concern or the main issue that we are facing. So that is what basically is very true. And if you look at the importance of the course that you are studying, you know, like there is a so big problem. Like say, for example, if you look at the problem in the bigger context, like what actually happens is that generally, like, you know, that if you look all over the world, billions of dollars are lost each year because many existing managers fail to use basic tools from managerial economics. You know, like economics, if I ask you to define economics, how do you define economics? Like say, for example, if I ask you that what is the definition do you think is the of economics, like how, what economics does, how economics is useful, and what economics actually does for us, will you like try to will you like, you know, like to answer this question, how economics works for us and what actually is the definition of economics in your view? Sir, economics help us to generate a money, give us employment, and learn us to know that how could we keep the society equal, Mm-hmm. how we earning, how we sending the money to the poor people, equal distribution, which Mm-hmm. ruled by the government. That actually you were talking about the America. If you are earning $100, so $40 goes to the government. This is a part of the tax. Mm-hmm. So far in our country, we hardly there is more than uh, uh, 20 million in Karachi, I think so, but hardly 1 lakh and 2 lakh people giving a tax on that. Very true. Why the rest of people not giving? Because they are not of having given that money. I was asking you about this, the definition of economics. What do you think what economics is? And you have told like, you know, very relevant and pertinent kind of definitions, like say, for example, how to utilize your resources, which are not a lot, to meet with your wants, which are so much, you know, like there are so many wants. There are so many things that you want to do in your life, but you have got limited resources. Like say, for example, what is about the time that you have, like say, for example, you have got 24 hours in a day and you want to spend that 24 hours on different kinds of activities, like you want to spend time on sleeping, you want to work in the organizations, you have to earn money, you want to socialize with your friends, you want to pray, you want to do, you want to go to gym, you want to read books, you want to watch movies, say for example, you want to do this and you want to do that. There are so many things that you want to do with the time, but you don't have got unlimited time available. Whatever 24 hours are available, you have to allocate these 24 hours between different uses. Now, what does economics do in this? Economics helps you make decisions. The decisions about the use of resources. Where should you be using your resources? Like say, for example, you have got 500,000 rupees and you want to invest this money somewhere. Where should you make investments, or where should you invest this money, where you should get, like, you know, which business you should be investing in, which activity you should be spending this money on, what you should be doing with this money. Similarly, you have got time, which is your resource. How should you be spending your time? Economics teaches you how to spend this time on different activities. Like say, for example, the time that you are spending with us, should you be spending that time with us or not?
what other alternate uses do you have got for the time that you are spending with us? जो आप टाइम हमारे साथ गुजार रहे हैं उसके और alternate uses क्या हैं? Say for example, during the same time you could work, you could earn some extra money, you could spend your time with your family, and you could actually have got the enjoyment with your family life, in your family life. You could spend that time at gym, you could actually improve your health, and you could do a lot of things basically during this time. But why have you chosen to spend this time here? Economics basically help you in making cost and benefit analysis. Economics helps you making or doing cost and benefit analysis. What is the benefit of attending this class and what is the cost of attending this class? What do you think? What is the cost of attending this class? So to gain knowledge? No, cost. This is the benefit. You are gaining the knowledge. Basically, this is a benefit and you are getting So attendance. costing the time and money? Yeah, like what is the cost? Like say for example, अगर आप थोड़ा सा specifically cost के बारे में बताएं कि इस वक्त जो आप अपना time यहाँ spend कर रहे हैं, क्योंकि देखें economics का सबसे पहला जो lesson है वो ये है कि there is no free lunch. जो कुछ भी आप काम करते हैं उसकी cost है. जिस तरह इस वक्त आप जो यहाँ पे बैठे हुए पढ़ रहे हैं इसकी आप एक cost pay कर रहे हैं. And what is that cost? अभी तक नहीं सर, पे कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे कर रहे हैं. इस वक्त मेरा फेवरेट ड्रामा आ रहा होता है और वो मैं नहीं देखती, आपकी क्लास अटेंड कर रही हूँ. वो आप YouTube पे देख सकती हैं बाद में. तो you have got a Yes, chance. sir. इसीलिए आपने छोड़ दिया Yes, या sir. Yes sir. Same the reason. अगर YouTube पे ऑप्शन ना हो तो फिर भी आप छोड़ देती हैं उसको? Yes sir, छोड़ना पड़ता क्योंकि आपकी क्लास इम्पोर्टेंट है ड्रामा से. Thank you very much. Yes, Anas, what do you want to say? Anas Aslam. सर वो फैमिली के साथ हम लोग जैसे अपना टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं. अगर हम ये क्लास ना लेते तो फिर ये कि फैमिली के साथ कहीं आउटिंग कर सकते हैं और वेरी ट्रू उनके साथ टाइम वेरी ट्रू. देखिए, you are losing some value by not spending your time with your family. You are losing some value by not working extra hours. You are losing some value in terms of entertainment, that if you were watching a drama during this particular time, if you were watching something else that you basically interests you, and you basically could, these are the values that you are losing. Now, what value are you losing and what value you are gaining? What value are you gaining by attending this class, and what value you are losing by not doing the activity that you could do if you were not here? Like say, for example, all of you would have been somewhere else. Like if I have not called this class so late, and if I would not have called you for the class at this particular moment, you would have been somewhere else. Like somebody would be in the office, somebody would be in the say for example with the family, or somebody would be watching drama, somebody would be actually spending time at gym, or there would be something, a lot of things that you would be doing. So economics basically tells you that how to make decisions. The decisions that you make, like say for example, the decision of doing this degree. The degree that you are doing, it is Masters in Economics, Islamic Banking and Finance, which perhaps is going to be the BS Islamic Banking and Finance. I'm not too sure right now. But you are going to get this degree. Like, what are you doing? Basically, you are investing your time in this degree. You are spending your money on this degree. Whatever time you spend on this degree cannot be spent on something else. Whatever money that you are spending on this degree cannot be spent on something else. Now, if you compare the use of this money here and the use of money somewhere else, if you compare the use of time here and the use of time somewhere else, now, if you think like, the value that you are getting from here is more than the value that you could get from somewhere else, then, and if you take this decision because they are getting more value here as compared to the value that you could get somewhere else, then it will be your rational economic decisions. Economics assumes that we are rational. Economics assumes that we always go for better value. Economics always assumes that we always prefer more on less. More on less means, like say for example, if you are getting more value here, you should not be doing some other activities. If you could get more value from somewhere else, you should not have been here to actually attend this class. Now, if I give you a situation, say for example, your semester has just begun, and you in the evening or in the night basically you get out the book and you start reading something. Somehow your friend comes to you and asks you to watch a movie with him or her. Now,
how will you decide? आप कैसे decide करेंगे कि आपको किताब पढ़नी चाहिए या मूवी देखनी चाहिए? किताब, क्योंकि अभी सेमेस्टर आपका स्टार्ट हुआ है, आपके पास you don't have got so much burden, you are not going to have exam very soon, so you perhaps, like, what will you decide? Will you watch movie, or will you read the book, or you will actually revise your lecture in the evening? What will you do? What will you decide? Will you be continuing with your book, or you will be leaving that book and go to watch movie? Yes. Yes, you say, like, Sir, I this just would be, forgot I your think, name. for Ji. Naved, sir. Ji, Naved, yes, please. Sir, it depends on how could we manage the time. If day after tomorrow I would have a paper, so Ji. may I could go with him to watch movie. Otherwise, if tomorrow I would have a paper, so I refuse it, because tomorrow would be my paper, so I'll Yeah, go yeah. for it. This would be my right decision, That's because great. Yeah. right now I do not have much time to get prepared for my paper, so I'll focus on my paper. Right. That is what basically is So a that is- situation. Like, say, for example, if you had exam tomorrow, you would definitely be deciding something else. Like, say, for example, if the similar situation arises that you are studying something and your friend comes, pops in and he asks you to watch movie with him or her, I think you will decide to watch movie again. Sorry for that. Like, because I reckon हम लोग movie को fancy करेंगे. I don't know what we fancy, but the rational decision is that if it is the night of exam, you should keep studying and do not watch movie. But if it is the beginning of semester, perhaps you can watch movie, and you can actually, postpone studies for the next day or for some other time. So this is what basically is the economic decision making. You always try to make decisions on the basis of your costs and benefits. What is the cost of doing this? The cost of doing any activity is the value that foregone by not doing some other activity. आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप बैंक ए में रखते हैं. अगर आप बैंक ए में 1 लाख रुपए रखेंगे तो वो 1 लाख रुपए आप बैंक बी में नहीं रख सकते. सपोज करें बैंक बी से आपको मिल रहे हैं 5% और इस बैंक से मिल रहे हैं आपको जो है वो 6%. तो आप 6% को गेन करने के लिए कितना परसेंट लूज कर रहे हैं? 5%. तो इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा गेन कर रहे हैं और कम लूज कर रहे हैं. लेकिन अगर सपोज करें कि जिस बैंक में आपने रखवाया हुआ है पैसे, उधर से आपको 5% मिल रहे हैं, लेकिन जिस बैंक में आपने नहीं रखवाया, जो दूसरा बैंक था, वो आपको 6% दे सकता था. तो इकोनॉमिकली ये इररेशनल डिसीजन है, क्योंकि आपको इकोनॉमिकली लॉस होगा. अकाउंटिंग लॉस नहीं हो रहा है आपको पैसे मिल रहे हैं 5%, लेकिन इकोनॉमिस्ट की नजर में आपको लॉस इस लिहाज से है क्योंकि जो आप डिसीजन ले रहे हैं उससे आपको वैल्यू कम मिल रही है, और जो डिसीजन आप छोड़ रहे हैं, जिस बैंक को आप छोड़ रहे हैं, उससे आपको वैल्यू ज्यादा मिल सकती थी. सो दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट. सो इफ पीपल डोंट एक्सरसाइज दिस इकोनॉमिक्स इन इट्स ट्रू स्पिरिट, what happens? There are billions of dollars which they lose every year because they don't think like economists. So this is what basically is a major concern, that you should be thinking like an economist. The basic rules guide managers to take optimal decisions that earn them maximum profit and increase their efficiency. So this is what basically economics, the business economics is really important. If you don't know the business economics, you generally end up on taking wrong decisions. And when you take wrong decisions, you always end up on making losses. And if you take a right decision, you can always gain a lot of benefit, and that can always help you in actually increasing value of your resources. Now, if you look at the basic economic problem, economics is normally defined as the study of how decision makers choose to allocate resources between alternative users. देखिए, हमेशा से एक चीज की बहुत बड़ी जंग रही है, और वो जंग किस बात की है कि आपको पता है कि आपके पास जो एक चीज है आपकी वांट्स, एक चीज क्या है आपके पास? वांट्स. और दूसरी चीज आपके पास क्या है? नीड, रिसोर्सेस. सपोज करें कि अगर आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा हो वांट से, तो क्या होगा? सरप्लस होगा सर, सेटिस्फेक्शन होगी, जिंदगी अच्छी हो जाएगी.
हाँ इजी एक्सेस होगा, इजी अवेलेबिलिटी होगी। यस अली नोमान, व्हाट डू यू वांट टू से? सरप्लस होगा सर। सरप्लस होगा, बिल्कुल तो अच्छा होगा। मतलब क्या ये पॉसिबल? सरप्लस जो है सेविंग होगी, जो सरप्लस होगा वो सेविंग हो जाएगी। ऑलराइट, ऑलराइट, ओके। तो अगर रिसोर्सेज वांट से ज्यादा हो तो आपका क्या ख्याल है, आपको इकोनॉमिक्स के प्रोफेशन की जरूरत रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं, आपको इकोनॉमिस्ट की जरूरत नहीं होगी। और अगर रिसोर्सेज ज्यादा हो वांट से तो बड़ी जिंदगी आसान हो जाएगी। जाहिर है कि आप ऐसा लगेगा जिस तरह कि आप ब्रुनाई दारुस्सलाम में रहते हैं, जहाँ पे जो है वो या आप बिल गेट्स हैं या आप जो है वो मार्क जुकरबर्ग हैं, जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं लेकिन उसकी वांट्स उसके हिसाब से उतनी नहीं है। तो जाहिर है कि आपकी लाइफ जो है वो बड़ी डिफरेंट हो जाएगी। तो चाहते हैं आप इस तरह से हो कि रिसोर्सेज आपके पास ज्यादा हो, वांट्स कम हो? ऑब्वियसली सर नहीं हो, नो सर। चाहते नहीं है आप, या ऐसा हो नहीं सकता? क्या ख्याल है आपको? सर वो वांट्स भी चाहते हैं, बिल्कुल कि पैसे के हवाले, पैसे जिंदगी के से हिसाब चाहत से। खत्म हो जाएगी। किस चीज की चाहत खत्म हो जाएगी? सर पे कोई भी कंपटीशन नहीं रहेगा। इंसान जो आगे बढ़ने की चाह के साथ काम कर रहा होता है वो खत्म हो जाएगा। ये क्या जरूरत है यार टेंशन लेने की, जब आपके पास रिसोर्सेज इतने ज्यादा है तो। जी सर इसमें दो बातें हैं ना सर इसमें जी, दो जी। बातें हैं, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल यही है कि ऐसा हो जाए तो सब लोग चाहते ही हैं, पर राइट, थ्योरी किसी न किसी हद तक करनी है तो आपको कहीं ना कहीं तकाज़ों में लगना है, तभी आप उस चीज को अचीव करेंगे। उसका एंजॉयमेंट भी तभी मिलता है जब मुश्किल से हासिल होती है। इजीली एक्सेस हो तो फिर उसका मजा भी नहीं होता। ये एक थ्योरी अच्छा। बात सर है। वैसे ये एक आप बात आप यही सऊदी अरब चाहते के शहजादों से पूछें, वो कितना एंजॉय करते हैं अपने पैसे को, उनको बहुत आसानी से मिल जाता है उनको सारा कुछ, तो बड़ा एंजॉय करते हैं वो सर जिंदगी। यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी इकोनॉमिक्स की प्रिंसिपल ऑफ स्केर्सिटी की, कि हम्म। रिसोर्सेज हमेशा स्केर्स होती हैं, लिमिटेड नहीं नहीं, होती वो हैं, तो स्केयर्स कभी बिल्कुल भी होते हैं, अनलिमिटेड लेकिन नहीं नहीं हो नहीं, सकती। बिल्कुल आप सही कह रही हैं बख्तावर, वो मैं बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लेकिन ये कि हम एक ऐसी सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं, आप बहुत सारी मूवीज और ड्रामाज में बहुत सारी चीजें एज्यूम करते हैं कि हीरो कभी नहीं मरता, या जो है वो वायरल बेसिकली ये होता है या वो होता है। तो वो, लेकिन ये कि हम ये सपोज एज्यूम कर रहे हैं कि बेसिकली जो है वो अगर रिसोर्सेज ज्यादा हो वांट से सर अगर एक सवाल है आपको। जी जी प्लीज। सर मैं कह रहा हूँ अगर रिसोर्सेज ज्यादा है हमारे पास तो ये इसका कॉज नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम कोई चीज जनरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी वांट से ही कम है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का जरिया नहीं बनेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट ही कम होगा, फिर वांट्स के हिसाब से उसको रिसोर्स को यूटिलाइज करना शुरू करेंगे, तो फिर वो लोगों को भी कम करना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, लोगों को कम करना पड़ेगा सिमरान? लेकिन अगर 100 मुझे अगर 100 कोई ऐसी चीजें बनानी है जिसकी रिक्वायरमेंट 50 की है, वांट्स 50 यूनिट्स की है, तो ऑब्वियसली मैं 100 की कॉस्ट तो बेयर नहीं करूंगा ना। फिर सब्सिक्वेंटली क्या करूंगा मैं कि जो अपने जो रिसोर्सेज जो मेरे पास काम कर रहे हैं उनको मैं रिड्यूस कर दूंगा। सही सही, तो मतलब आप उसको तो मतलब इस वांट्स पे और रिसोर्स बराबर है। अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। ऑलराइट, ऑलराइट। तो इसमें हमारे पास जो एक मुफ्ती साहब हैं वो बताएं कि अगर रिसोर्सेज ज्यादा हो और दिस इज वांट्स माय कम हो तो क्वेश्चन। क्या हो? जी जी जी। तो वो ये बिल्कुल आपका रेलेवेंट क्वेश्चन है, जाहिर है ये पॉसिबल चूंकि नहीं होता, हम जैसे कि इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो है वो बेसिकली देखें ये जन्नत की इक्वेशन है। ये दुनिया में तो खैर नहीं हो सकता, ये जन्नत में होगा कि आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे और वांट्स कम होंगी। मतलब आपकी वांट्स आप कर करके थक जाएंगे लेकिन आपकी रिसोर्सेज खत्म नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो कोशिश करें कि जन्नत में जाएं। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि रिसोर्सेज बराबर हो वांट्स सर के? वैसे जैसे जी 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 बोलिए नवेद, आप क्या बोल रहे हैं? सर मैं कोविड पेंडेमिक को देख के मद्देनजर रख के एक चीज बोल रहा था, क्योंकि उसमें क्या था कि डिमांड बिल्कुल चीजों की कम हो गई थी, नहीं यू आर राइट। देखिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, देखें बिल्कुल आपके पास तो दुरुस्त उसके बात है। इम्पैक्ट। देखिए रिसोर्सेज अगर ज्यादा होंगे, हर एक के पास ज्यादा होंगे, तो फिर जाहिर है आपके लिए काम कौन करेगा, प्रोडक्शन कौन करेगा? जाहिर है आपको चीजें भी तो चाहिए ना, जाहिर है कि आपको लाइफ को देने के लिए ये आपको चीजें भी चाहिए। तो ये डूडलिंग ना करें भाई, ये जो लोग डूडलिंग कर रहे हैं, तो ये बेसिकली जो है वो अच्छा। बहरहाल देखिए ये कि अगर रिसोर्सेज वांट्स के बराबर हों तो क्या होगा? एक और सिचुएशन अगर हम सर रिसोर्सेज अगर वांट्स के बराबर हैं तो फिर तो जी जी
तो सेटिस्फेक्शन होगी कि सेटिस्फेक्शन जो होगी, चाहिए वो सर तो मिल गया। विन विन सिचुएशन होगी। तो अगर आप रिसोर्सेज को वांट्स के बराबर नहीं कर सकते तो वांट्स को रिसोर्सेज के बराबर कर लें, ऐसा कर सकते हैं? हाँ, दिल मार के कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए आप जिंदगी में कनात भी तो कर सकते हैं ना कि अगर वांट्स को रिसोर्सेज के बराबर कर लें, यानी आप वो ख्वाहिश ही ना बिल्कुल यही करें बात जिसके है, आपके पास रिसोर्सेज ना हो, तो जिंदगी आसान हो जाएगी आपकी। लेकिन सर ग्रोथ रुक जाएगी। नहीं नहीं आप सर लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है ना सर सर। क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो वांट्स बढ़ाने के लिए 2 की जगह 4 रोटियां खानी पड़ेंगी, 20 किलो आटा लाना पड़ेगा। सर इसके अंदर इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो हो जाएगा? हाँ नहीं बिल्कुल, इन दोनों सिचुएशन में इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये बात आपकी दुरुस्त है। असल में जो सिचुएशन हमारे पास होती है वो ये है, ये जान के बड़ा बनाया है मैंने कि हमारी वांट्स बहुत ज्यादा हैं और रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम है। असल में हमें वी हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज दोज रिसोर्सेज टू मीट विद दिस अनलिमिटेड वांट्स। देखें आप लोग, अब आप में से खुद भी बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज को मैनेज कर रहे होंगे, लेकिन जब आपने बचपन से अपने माँ बाप को देखा है कि वो हमेशा इस लड़ाई में रहते हैं किस तरीके से अपनी सैलरी को अपने एक्सपेंडिचर के साथ अपने एक्सपेंडिचर को मैक्सिमाइज कर सकें, किस तरीके से जो है वो जिस तरह आमतौर पे जिस तरह माएँ होती हैं या पेरेंट्स होते हैं वो अपनी ज़रूरियात को कम करके बच्चों की ज़रूरियात पूरी करते हैं, और इस तरीके से वो ज़रूरियात पूरी करते हैं जिसको जो है वो जिस तरह बाप जो है सारी ज़िंदगी जो है वो मोटरसाइकिल चलाता रहता है या साइकिल चलाता रहता है, लेकिन वो बच्चे जब लेते हैं अपनी कार तो जाहिर है वो माँ बाप को नहीं बिठाते, अपनी बीवी को बिठा लेते हैं। तो बेसिकली जाहिर है कि ये आप हर पूरी जिंदगी से एक रिसोर्सेज की और वांट्स की एक जंग चल रही होती है, जो कि आपने देखी होगी बचपन से अपनी फैमिलीज में कि हाउ आर यू मैनेजिंग योर रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू वांट्स, कि आपके पास जो है वो आप रिसोर्सेज को वांट्स को किस तरीके से आप मैनेज कर रहे थे, क्या करते हैं आप जब आपके पास रिसोर्सेज कम और वांट्स ज्यादा हो तो क्या करना चाहिए? सर प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि कौन सी जो है ज्यादा जरूरी, कौन सी काम है। जी बिल्कुल, वेरी गुड। ये सारे की सारी प्रायोरिटाइजेशन की बात है कि यू हैव टू प्रायोरिटाइज, कि आपको जो है वो ये देखना पड़ेगा कि कौन सी रिसोर्स, कौन सी ज़रूरत आपकी ज़्यादा है, कौन सी ज़रूरत आपकी कम है। जिस तरह जब आपके घर में सैलरी आती है तो सबसे पहले आप अपने पैसे को किस चीज़ पे स्पेंड करते हैं, उसके बाद किस चीज़ पे करते हैं, उसके बाद किस चीज़ पे करते हैं, उसके बाद किस चीज़ पे जो करते हैं। नेसेसिटीज है ना। जी जी बिल्कुल, ये प्रायोरिटाइजेशन है कि आप किस किस चीज़ को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ये आपकी मैनेजमेंट है। आप उस चीज़ पे पैसे स्पेंड करते हैं जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है या मैक्सिमम ज़रूरत होती है आपकी। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस है which actually tells you how to manage your limited resources to meet with your unlimited wants, right? और देखें देर आर बहुत सारे डिसीजंस देखें आपके पेरेंट्स ले रहे हैं बहुत जिंदगी से आपकी, और आप बहुत सारे डिसीजंस आप ले रहे होंगे। जिस तरह मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे यहाँ डिसीजंस आ रहे क्या है, मुझे मैरिड पर्सन लाइक माय डिसीजंस एट होम, लाइक माय वाइफ टेक्स डिसीजंस। इसका मतलब ये नहीं है कि आई कांट टेक डिसीजंस, लेकिन माय वाइफ डज इट फॉर मी। तो वो जाहिर है कि इन अ हाउस, लेकिन शी हैज नॉट स्टडीड इकोनॉमिक्स। So why do you think the people basically who have not ever studied economics can also take decisions? Like, say for example, your parents have been taking decisions about the use of resources to meet with unlimited wants for so long, and they have been doing it successfully because they have also invested money in you. They have just got you good food, they have got you good clothes, they have got everything to you in your life, and they have been successful in doing this. How do you think they have been successful without studying economics in doing this? क्या ख्याल है आपका, क्यों वो सक्सेसफुल हो गए बगैर इकोनॉमिक्स पढ़े इन तमाम डिसीजन को लिए, और आपको इकोनॉमिक्स पढ़ के आपको क्या फायदा होगा इसका, एंड हाउ इट विल मेक यू डिफरेंट? सर अपनी जरूरियात ये जो बातें आपने की वो तो नॉर्मल। जी जी सर ये तो जो बातें अभी आपने की वो तो बेसिक थी ना, वो तो उसके लिए इकोनॉमिक्स शायद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। वो वक्त के साथ साथ उन्हें ये रियलाइज होता रहा कि इस चीज की जरूरत है, ये चीज हमारे पास रिसोर्सेज है और हमें इसी में रहते हुए इसी चीजें मैनेज करनी है। अच्छा, जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली उसको थोड़े लार्ज स्केल पे चले जाते हैं, प्रोफेशनल एज अ प्रोफेशनल कैरियर में ये ज्यादा हेल्पफुल रहता है, जबकि वो डोमेस्टिक यूज में ज्यादा रहता है। I think ये थोड़ा सा शायद इसमें डिफरेंस हो सकता है। very good answer, like Ali Noman, thank you very much for this answer. Yes Haris, do you want to say something? तो बस मैं यही कह रहा था कि जब माइक्रो लेवल पे हम बात कर रहे होते हैं तो हर इंसान के सामने ख्वाहिशात बहुत होती हैं, लेकिन उसको पता होता है कि उसने मुस्तकबिल में अपनी ज़रूरियात को किस तरह मीट करना है, या मुस्तकबिल में किस किस्म की ज़रूरियात उसके सामने आने वाली है। मिसाल के तौर पे
बेटा बेटी है तो लाज़िम बात है तालीम के अखराजात और शादी के अखराजात मुस्तकिल किस किस्म के सामने आने वाले हैं। वो एक माइंडसेट पहले से बना हुआ होता है और ये एक ऐसी जरूरत है कि जिसकी वजह से इंसान को वो स्टडी किया हुआ हो ना हो इस चीज का, लेकिन वो जरूरत है जो उसको उभारती है कि वो काम सही तरीके से करे। फिर इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की जो बात आती है तो वो लाजिम बात है, जिस तरह अली भाई ने बात की कि जब चीजें बढ़ती हैं मैक्रो लेवल पे आती हैं तो उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको उस तरीके से फिर मैनेज किया जाता है स्टडीज के जरिए। I appreciate your answers, basically of everyone, and Ali Noman specifically. Thank you very much for your response about that, and that is very, very correct. You know, like there are so many decisions that we take every day. There are some decisions that we take every month. There are very few decisions that we take every year, and there are very, very few decisions that we take once in our life. And there are so many decisions actually whose frequency is different. And for all the big decisions, you need to study the problem. देखिए आप अगर इवन ये कार खरीद रहे हैं तो आप कार को आप एक रोजाना का डिसीजन नहीं, आप रोजाना कार नहीं खरीदते इफ यू आर नॉट बिजनेसमैन जो कि ऑटो अपना जो है वो आपका ऑटोमोबाइल का शोरूम है, तो आप ज़्यादा रोजाना गाड़ियां नहीं खरीदते। जो रोजाना गाड़ियां खरीदता है उसके लिए गाड़ी खरीदना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जो जिंदगी में एक दफा गाड़ी खरीदता है उसके लिए बहुत एक मुश्किल काम है। इसी तरीके से अगर आप एक बिजनेस में हैं और आपको $10 बिलियन मिलते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, it is not a simple thing, it's not something that you do every day and there's huge cost. अगर आप देखें रोजाना के जो डिसीजन है, आप सब्जी खरीदने का डिसीजन है, अगर आप सब्जी गलत खरीदते हैं, आपने सब्जी खरीदने के लिए गए और आप गलत सब्जी खरीद के लेकर आ गए तो जाहिर है आपको नुकसान होगा, लेकिन कितना बड़ा नुकसान होगा, वो इतना बड़ा नुकसान है कि वो मैनेजेबल है। वो इतना नुकसान है कि आप जो है उसको दोबारा सही अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। आज आपने सब्जी गलत खरीदी है, कल आप सही खरीद लेंगे। लेकिन अगर आप $10 मिलियन अगर आप आज गलत इन्वेस्ट कर दें तो कल आपके साथ क्या होगा? सर शायद वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। ये बात आप सही कह रहे हैं, वो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता और उसके बाद जो कुछ होगा वो दिखाया भी नहीं जा सकता। तो इट इज अ वेरी ट्रू थिंग, लाइक यू विल नॉट बी एबल टू survive if you basically you are investing your money or company's money at the wrong place. And the people who make right decisions, the people who invest rightly, who make investments correctly, and who make investment wisely and efficiently, they get rewards of it. They get a lot of promotions, they get a lot of bonuses, they got a lot of money, and they got a very good lifestyle basically if they are just doing it. So this is what we need to learn, like this is what something we have to know, that how to manage your unlimited resources with your how to meet with unlimited wants with your limited resources. Now, what kind of resources generally we have got? Like, say, for example, some of the resources that we have got are financial resources. Like, say, for example, we have got cash, we have got bank deposits, we have got loans, we have got securities that we have to manage. And these are the financial resources that a manager has to manage actively so that he could get return for its or his organization. And other resources that we have got are physical resources, like, say, for example, the land, the building, machines, plants, and a lot of things. Basically, they are physical resources or the real resources that you have. You are also utilizing those resources to get use of them and to make use of them and to just get return on them. And similarly, another kind of resources that we have got, and it is the most important resource in the modern days, that is the human resources. People, the world is, the world is going through right now a revolution that is called knowledge revolution. The world is actually having a knowledge revolution, and in this knowledge revolution, the most important task is of the humans. Humans are creating knowledge. Humans are bringing new innovations, inventions, new kind of methods, new kind of ways. They are entrepreneurs. They are the people who are creating new different kind of dimensions of doing this and that. Like, say, for example, the Bill Gates, like, say, for example, Mark Zuckerberg, like, say, for example, Jeff Bezos, like, say, for example, there are so many young entrepreneurs who have made millions and billions and billions and billions, and sometimes the billions of dollars, hundreds of billions of dollars they have made. Like, say, for example, if you look at the wealth of Jeff Bezos, his net wealth is more than $230 billion. $230 billion वो ओन करता है। अभी रिसेंटली आप देखें पाकिस्तान जो IMF के साथ जो अग्रीमेंट में है, we are actually going to have the package of $6 billion over the different time period, और उस $6 billion के लिए पूरे कॉम जो है वो basically it has brought on to very difficult terms
the energy prices are increasing, this is happening, that is happening, the life is getting so difficult for the general public, just because that we want to have funding from the IMF, and that funding overall is just $6 billion. And the wealth of that Jeff Bezos is $230 billion. The Facebook has paid in many instances more than $10 billion as just fine. The fine on their actions, the fine on their operations. So that is what basically is the scale. We have got human resources. If you have got smart people, if you have got the people who can change the fate of the countries, that is basically very important. The humans are really important, and that is what the knowledge economy is all about. If you look at the top list of the billionaires in the world right now, who do you find on the top? You find all those people who belong to the technology sector. They are the people who have brought new changes to the technology, who have made the world a different place now. Say for example, if there was no Windows, if there was no Facebook, there was no WhatsApp, there was no kind of internet, there was no kind of technologies that basically we are actually having right now, the world would have been very different. And these people are getting advantage of being the people who have discovered that. And this is the human resource that basically we need to use of. Say for example, look at India, even if you don't go far to the US or to the UK or Europe, look at the India has got can you compare any country's exports of IT with India? It's very difficult for any country to stand in front of India as far as this exports of this IT is concerned. And that is what basically they are doing with the youth, with their minds, with their people. Everywhere in the world, you find these all Indian people working at very, very strategic position. Say, for example, who is CEO of Google? Do you know who is CEO of Google? Sundar Pichai. Sundar Pichai, an Indian guy. Who is the CEO of Microsoft? Who is the CEO of Microsoft? I'm just forgetting his name. He's also Bill Gates. No, Bill Gates. Bill Gates. It is an Indian, Sudyala, and I'm just forgetting his name. He is also Indian. Bill Gates has left as a place of the CEO of the Microsoft. He is just he's the top of the list, but he is not the CEO right now. They are the people basically who are heading the top-notch organizations in the world. They are Indian people, and they are basically running those all organizations, and they are basically smart people. That's why they have been they are being rewarded all over the world. So we need to work on these human resources, and these human resources are really important. The companies and the firms and those all people basically have got different factors of production. We have got land, we have labor, we have capital, we have organization. What do you know? What do you mean by land? What do you understand by land? जगह जो भी एक प्लेस होती है, जो एक जहाँ पे लैंड, द पीस ऑफ लैंड, उसको इसी तरह कैसे जहाँ पे कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट की जा सके, या कोई भी चीज वहाँ पे एग्रीकल्चर के तौर पे यूज की जा सके, जहाँ इसी कोई लैंड का एक वो कहते हैं. All right, Ali, yeah, we'll just take your point. Yeah. Anybody else wants to say, what do we mean by land? लैंड सम्राट जहाँ सर प्रोडक्शन प्रॉपर्ली हो सके, मतलब सुटेबल हो जो हम प्रोडक्ट करने जा रहे हैं. Okay, all right, good. जैसे हम राइस जनरेट करते हैं तो उसके लिए लेक का पास होना जरूरी है. बिल्कुल ड्राई लैंड पे तो हम नहीं कर सकते, तो वहाँ मतलब दिस इज नॉट बेनिफिशियल. Haris, what do you want to say? सर जमीन का वो टुकड़ा कि जिसके जरिए से हम अपनी प्रोडक्टिविटी कर सकें. देखिए आप लोग you basically are thinking this also is called land. लेकिन land is not a small definition. Land means all natural resources. Land means all nature gifted resources. जितनी भी God gifted चीजें हैं, जैसा देखिए ना, दो चीजें हैं हमारे पास. कुछ resources ऐसे हैं जो कि man made resources हैं, machines हैं, plants हैं, ये man made resources हैं. लेकिन environment है, coal है, ये minerals हैं, प्रॉपर लैंड है बेसिकली जिसकी आप बात कर रहे हैं, बेसिकली जो आपका पीस ऑफ लैंड जहाँ पे आप जॉब, जहाँ पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करते हैं या आप कल्टीवेशन करते हैं, वो भी जाहिर है नेचुरल रिसोर्स है. नोबडी हैज क्रिएटेड देम. Allah has gifted us all this. Whatever has been gifted by nature is called land, and whatever is made by men for the production is called capital. Capital actually belongs, or capital means man-made resources,
and land means nature gifted resources, the natural resources, the resources which actually have been gifted by nature, which Allah has made, which God has given to us for our use. And if you try to define labor, how do you define labor? ह्यूमन रिसोर्स, कोई भी प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, जो भी कोई चीज काम करने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी जी, चीज को बिल्कुल। परफॉर्म करने, ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए जो रिसोर्सेज होती है वो लेबर कहलाती है। Yeah, very much. देखिए, labor, generally when we define labor and when we start with the class and the labor is defined, the labor is defined as somehow, you know, like we actually, the people who do the petty jobs, like a person who is carrying bricks from one place to the other, or the person who is basically, you know, like doing some kind of small activities, who are just doing the physical activity. But everybody is labor. Like say, for example, for University of Karachi, its teachers are labor. So labor is any kind of mental or physical effort. Labor means any kind of mental or physical effort that people do to actually produce things. Similarly, organization. What does the organization do? How do you define organization? जैसे लेबर और लैंड दोनों इन्वॉल्व होकर कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, या जी। कोई आउटपुट निकल रहा हो। Organization basically वो इदारा होता है which brings all these things together. You know, like who, like say for example, University of Karachi or your Sheikh Zayed Institute is an organization. What it does, it invites lecturers, which is it's the labor. It actually has like is constructed at certain place, which is land. It has got machines. It has got like, you know, chairs and all these things for like which is actually are used as a capital. But Sheikh Zayed itself is an organization or entrepreneur or a like, you know, owner of the business. This is the person or this is the entity that bring all other factors of production together to do the production. So organization basically has got like, you know, very important role to play. So as every other kind of like, you know, factor. And the payments that you make to those factors of production are called, you pay rent to land. Rental income. Rent is paid for the land. Wages are paid to labor. And interest is paid to capital. Capital means like, say, for example, the money that you borrow from the bank to buy machines and these things, and you pay interest on it. And what about the profit? Profit is the amount which goes to organization. Organization. Whatever is left after paying rent, wages, and interest, that is the profit of the organization, and that is the residual income or the residual money that basically the firm gets. So the profit, interest, wage, and rent, they are all the like, you know, things basically that is something is related to the payments of the income that the firms get. Now, this is the basic problem that economics actually deals with, as we have been talking about the problem of scarcity. What is the problem of scarcity? That there are not enough resources to meet needs of everyone. Everyone wants to have home, but everybody cannot have home. Everybody wants to have car, but everybody cannot have cars. Everybody wants to have job, but everybody cannot get the job. Everybody wants to get, you know, like all the needs or all the basic facilities in their lives, but everybody cannot buy them because they are scarce. They are not unlimited. The economic problem or the economics is about how to allocate these scarce resources to meet unlimited wants. You want to do a lot of things, but the resources are limited. So you somehow manage them wisely. You have to manage them like, you know, efficiently so that you could get the maximum with your resources. देखिए, आप बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, तो अब या बाहर सपोज करें आप कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, तो कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं तो आपके पास बजट जो है वो लिमिटेड होता है. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको के बहुत अच्छे कपड़े खरीदना आते होंगे, जिनको बहुत अच्छे कपड़े खरीदना आते होंगे, वो बहुत कम पैसों में बहुत अच्छे कपड़े खरीद के ले आएंगे. लेकिन जिनको कपड़े खरीदना नहीं आते या जिनको कोई चीज खरीदना नहीं आती, वो बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च करेंगे लेकिन उनको उतनी अच्छी चीज नहीं मिलेगी. तो इसका मतलब ये है कि जिनको खरीदना आता है, दे कैन गेट बेटर यूज ऑफ देयर मनी. But the people who don't know how to buy the clothes or how to buy the things or how to do the grocery,
they will spend a lot of money but they will not get any value. आप बहुत सारे पैसे खर्च करके बेकार चीज लेकर आएंगे, और जो स्मार्ट लोग होंगे वो बहुत कम पैसे खर्च करके ज्यादा अच्छी चीज लेकर आएंगे. Economics is all about this. Economics is about you spend money and you get the maximum value. जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर आप एक पिज्जा शॉप में जाएं और वहां पिज्जा शॉप में लिखा हो कि you pay $1 and by paying $1 you will be entitled to take 1 bite. आप $1 पे करें और आप $1 पे करने के बाद पिज्जा की आप 1 बाइट ले सकते हैं. तो आपने $1 पे किया, अब आप बताइए आप कितनी बड़ी बाइट लेंगे? जितनी बड़ी लेना पॉसिबल हो, जितनी बड़ी मुंह में आ सकती है. जी जी, आप you will try to do like you know try to open your mouth as wide as possible. जाहिर है आप उतना तो नहीं कर सकते जितना पॉसिबल ना हो, लेकिन जितना पॉसिबल है, यानी जिस तरह इसकी मिसाल इस तरह से लें कि you can run fast, but how much fast you will run if some dog is chasing you? तो आपके पीछे कुत्ता लग जाए तो कितना भागेंगे? मैक्सिमम पोटेंशियल पे, मैक्सिमम पोटेंशियल इतना भागेंगे डॉग हमें पकड़ ना सके. हाँ, पोटेंशियल देखिए आप वैसे तो आप भागेंगे, जाहिर है अगर आप भाग रहे हैं तो आप, जिस तरह हम भी भाग रहे थे तो हमने अपनी शिन के अंदर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करवा दिया. तो बेसिकली जो है वो एक्चुअली जो आप जब भागते हैं तो आपके पास कोई स्पीड होती है और आप एक बहुत तेज भाग सकते हैं, लेकिन आप कितना तेज भागेंगे अगर आपके पीछे कोई कुत्ता लगा हो या आपके पीछे कोई खुदा ना खास्ता कोई चीज ऐसी हो जो कि आप जिससे यू आर स्केयर्ड ऑफ, तो आप यू विल एक्चुअली बी गोइंग एट द मैक्सिमम पोटेंशियल. आप यू आर टेकिंग अ बाइट बाय पेइंग $1, यू विल बी ट्राइंग टू टेक द बिगेस्ट बाइट. This is called the maximization. You try to use your resources to maximize your wants. जितने भी आपके पास पैसे हैं, देखें economics does not give you Aladdin's lamp. Economics does not help you or does not give you any kind of magic which can increase your resources. What economics tells you that how can you efficiently utilize your resources. I hope I am making sense to you guys, right? Now, what is the opportunity cost? Opportunity cost, as we have discussed, the opportunity cost is the value that you lose by not doing some activity. Like again, the opportunity cost represent the potential benefit an individual, investor, or business misses out when choosing one alternative over another. I was giving you the example that you are spending your time here and you are getting inshallah some value, alhamdulillah, but you are getting some value by spending your time with us here, but you are also losing some value by not spending the same time at work, with your family, at gym, or any other place. So the value that you are not getting by spending your time at work or gym or anywhere else is your opportunity cost. So opportunity cost, according to a simple definition, is the value of next best alternative. The value बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने अभी बताया था कि एक बैंक में अगर 6% मिल रहा है और दूसरा बैंक जो 5% दे रहा है, तो जो मैं 5% नहीं ले रहा, that is my opportunity cost. Very right? good. Yes, very much. जो मैं lose कर रहा हूँ. Very much. So the opportunity cost for your decision according to economics is 5%. But just think just make things other way around. Like say, for example, you're investing with a bank, which is paying you 5%. But there was another bank in the town where if you would have put your money, you could get 6%. Now, to get 5%, how much are you losing? You are losing 6%. Economically, this is irrational decision. Economically, this is an irrational decision. Why do you think, do you think people take irrational decisions? Irrational, बिल्कुल लेते हैं सर. अच्छा, क्यों लेते हैं? लेना ही पड़ा ना, जैसे सर हम सर वैसे ही कोई हम चीज सर नॉर्मली जो एक पर्सपेक्शन है कि रैशनल डिसीजन लिया जाता है. हम 6% के लिए 5% क्यों लूज करेंगे, मतलब 5% के लिए हम 6% क्यों लूज करेंगे. वेरी गुड. या लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी. अली नोमान, व्हाट डू यू वांट टू से? सर मैं ये बताना चाह रहा था कि अब एक नई चीज के लिए तो हमने कुछ ना कुछ छोड़ना ही पड़ेगा ना. नहीं, कुछ देखिए जो आप छोड़ रहे हैं उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, जिसको आप पकड़ रहे हैं उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए. दैट्स व्हाट इज द आइडिया. कोई चाहता नहीं है कि रैशनल डिसीजन ले.
कोई चाहता नहीं है, लेकिन लाजमी बात है कि हर इंसान की कैलकुलेशन और हर चीज वक्त पे बराबर नहीं हो सकती है, वेरी तो ट्रू। वो कहीं ना कहीं गलती तो कर ही जाता है। देखिए कुछ डिसीजंस आप बिल्कुल और सही कह कहीं रहे हैं, आप इसलिए लेते हैं क्योंकि गलत लेते हैं क्योंकि आपको उसके बारे में पता नहीं होता कि दूसरी जगह से क्या वैल्यू मिलने वाली है आपको। ऐसा ही है ना, ये कहना चाह रहे हैं ना आप हारिस? सर रिस्क फैक्टर भी हो लेकिन सकता है सर सर इसमें। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। जी जी नवेद, आप क्या बोल सर रहे समटाइम्स ऐसा सर मैं ये कहता कि आई गो फॉर द 5% वन, वहां मुझे सिक्योरिटी अच्छी मिल रही है कि नहीं नहीं यहाँ पर देखिए जो आपको यहाँ पे अगर हम देखिए जब हम इसको कंपेयर कर रहे होते हैं वी कीप एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट और सेम। जाहिर है ये तो फिर वो जाहिर कंपैरिजन नहीं बनता क्योंकि जाहिर एक चीज आपके घर के करीब है, दूर है, सिक्योर है, इनसिक्योर है। इसमें बेसिकली वी आर जस्ट इफ यू कीप एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट, you are basically investing at the place where you are getting 5% and you are not investing at the place where you could get 6%. That is basically the question. सर लेकिन कॉस्ट ऑफ जो आपने किया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी ये होगी कि जो एक गवर्नमेंट बैंक मुझे इन्वेस्टमेंट मिल रही है 5% पे और प्राइवेट पे मुझे मिल रही है 6%, तो मुझे ये होगा कि चलो मैं 6 पे मैं अर्न तो ज्यादा करूंगा, लेकिन मुझे अगर कोई लॉस हुआ तो मुझे कैपिटल पे भी अपनी जो इक्विटी है उस पर भी लॉस होगा। नहीं और जो देखिए गवर्नमेंट है वो आप देखिए आप थोड़ा सा सिचुएशन को देखें। एक बात और मैं आपको बताऊं, देखें ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ही क्लास, लेकिन मुझे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं, देखिए डोंट ओवरथिंक। जो सिचुएशन होती है ना उसको आप डोंट टेक लाइक डोंट एज्यूम थिंग्स अबाउट थिंग्स बेसिकली योरसेल्फ। देखिए इस तरह इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं कि यू आर कंपेयरिंग द 5% रिटर्न विद 6% रिटर्न और यू आर कंपेयरिंग 6% रिटर्न विद 5% रिटर्न। जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। एवरीथिंग एल्स शुड रिमेन कांस्टेंट। If they don't remain constant, you cannot compare the private investments with public investments or government investments. You cannot compare the investments in one place which is different from the other place. तो उसके लिए जाहिर कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। Are you getting my point, ठीक है, Nabil? then go for 6% सर। जी अच्छा, मैं आपसे बोल रहा था कि keeping all these things same like but still people do not take rational decisions. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम रैशनल डिसीजंस नहीं लेते हैं क्योंकि हम लोग इर्रेशनल बीइंग्स हैं। देखिए मैं आपको एक छोटे से डिसीजन के बारे में बताऊं कि आप सुबह के टाइम आपकी आंख खुलती है और आपको फजर की अजान की आवाज आ रही है, तो अब देखें कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस को देखिए। आप आपका जो कॉस्ट है वो क्या है नमाज पे जाने की, कि आप अपनी नींद को सेक्रीफाइस करेंगे, उस आराम को सेक्रीफाइस करेंगे जो कि आप उस वक्त वहां पे आपको मिल रहा है, और अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा, मतलब वो बेनिफिट, और यू आर कंपेयरिंग द बेनिफिट विद स्लीपिंग एक्स्ट्रा 10 मिनट्स और 15 मिनट्स। तो क्या रैशनल डिसीजन होना चाहिए? नमाज पढ़े जी, लेकिन हम क्या करते हैं, हमसे मुराद ये कि इसलिए जल्दी नमाज ये देखें कितना सो रहे होते हम हैं। लोग दुनिया के हिसाब से देखें 1% भी लूज नहीं करना चाहते। लाइक अगर हमें पता हो कि एक जगह से 5% हम ले रहे हैं और दूसरी जगह से 6% मिल रहा है, या मैं नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पे शेख ज़ायद में, मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, अगर यही नौकरी में कहीं और करूँ मुझे उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो मैं ज़ाहिर कोशिश करूंगा ये नौकरी ना करूँ, वहां जाके करूँ ताकि मुझे ज्यादा पैसे मिले। मैं व्हाई आई शुड स्पेंड माय टाइम विद शेख ज़ायद इफ यू आर गेटिंग लाइक लेस मनी एज कम्पेयर टू द मनी आई कुड गेट फ्रॉम समवेयर एल्स। तो आपका क्या ख्याल है बेसिकली लाइक देखिए व्हाई डू वी टेक सच डिसीजंस, बेसिकली वी आर, ये इरेशनल डिसीजन नहीं है? It is the most stupid decision anybody can take. देखें आप, what are you losing, what kind of value you are losing and what kind of value you are gaining. What kind of value you are gaining by sleeping extra 20 minutes, and what value are you losing by not praying at the right time? This is a very, very important, like, and why do we make these kind of decisions? Because of a lot of reasons. Like the similar thing happens in a real life. बहुत दफा हम लोग, हमारे moods हैं, हमारे likes हैं, we are emotional beings. बाज़ औक़ात people spend a lot of money on brands. They buy something which they can buy at very lower price, but they pay a lot of money for it because just for the show off, just for the snobbish behavior, just for the sake of status, just for the sake of a lot of things. So we take a lot of decisions which actually are not somehow economically correct. So, and if everybody would have been taking the right decisions all the time, the world would not have faced the crises. Like say, for example, the crisis of 2007, 2008 happened in the US. And similarly, the crisis happened in 1930s. And there have been so many crises that have happened at different places all over the world at different times. So the world would not have experienced these crises if everybody was rational. We are not rational. We are not rational beings, but somehow this economics assumes that we are rational, and this is one of the strongest and one of the weakest at the same time
assumption of economics. Okay, so now this is what actually is the opportunity cost, the money that you spend on dining. The same money you could spend on buying clothes. So the opportunity cost of the decision to buy dinner at a restaurant is the cost of the clothes that you did not buy. Like say, for example, you're spending money on the food. The same money could be spent on some clothes. So you could get this. This is what basically you are losing the value and you are gaining this value. So you will compare that how much is the value that you get by dining outside and how much value you would have got if you would have spent the same amount on buying clothes. So this is the value that you are losing and the value that you are not. So now basically the concept of scarcity in Islam. What does Islam say about scarcity? What does Islam says about scarcity? If Muhammad Yusuf is with us, would you like to shed some light on it? What Islam says about the availability of resources in the world or the universe? Muhammad Yusuf, I think he is not with us. जी sir, मैं हूँ यहाँ पे. All right. See, so would you like to say something about it, from the Islamic perspective, what Quran says, what basically Hadith says about the availability of resources in this world? Because generally I get this question from Ulama Karam all the time, and I just actually discuss with them economics that the Islam says, Quran says the resources are not scarce. What is your view about this? सर स्कैरसिटी की जरा डेफिनेशन जरा बता देंगे वो. देखिए, स्कैरसिटी का मतलब ये होता है कि रिसोर्सेज, इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि सारे लोगों की डिमांड पूरी हो सके. लाइक से फॉर एग्जांपल वी डोंट हैव गॉट इनफ लैंड कि जिससे इतने आउटपुट प्रोड्यूस की जा सके जिससे सबको खाने को मिल जाए. हमारे पास इतना ज्यादा जो है वो मशीनरीज अवेलेबल नहीं है जिससे इतनी चीजें बनाई जा सके जिससे लोग सब इस्तेमाल कर सकें. हमारे पास इतना फ्रेश वाटर नहीं है कि हर किसी को फ्रेश वाटर मिल सके. हमारे पास इतना जो है वो अच्छी एनवायरनमेंट नहीं है, एनवायरनमेंट भी स्केर्स है, हर चीज स्केर्स है. जो भी कुछ आप देखें, आप चाहते हैं कि हर पूरी दुनिया के लोगों को कपड़े पहनाए, लेकिन आपके पास इतना कपड़ा मौजूद नहीं है कि आप हर एक को जो है वो प्रॉपर क्लोथ और इतने क्लोथ दे सकें. हर एक को घर चाहिए, लेकिन हर एक के लिए घर नहीं बन सकता. हर एक को जो है, बहुत सारे लोग सड़कों पे सोते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो दे कैन नॉट अफोर्ड. तो ये स्कैरसिटी है सर. ये आपकी जरूरत है उससे कम है अवेलेबल रिसोर्सेज. जी बताइए सर. मेरे ख्याल से इसमें हम ये चीज ऐड करेंगे, पिछले साल शायद हमारा सरफराज साहब ने भी इस बात को बताया था इस्लामिक इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए कि जो जरूरियात हैं वो इस दुनिया के अंदर तो मुकम्मल पूरी नहीं हो सकती. जरूरियात को पूरा करने के लिए बल्कि आखिरत है जहाँ पे जो है वो अपनी जो जरूरियात पूरी मुकम्मल जरूरियात तो वहीं ही पूरी हो सकती हैं. वेरी मच. तो लेकिन हम जी आप बोले. तो अब जो जरूरियात, अब हम यहाँ जो कोशिश करते हैं कि हमारी वांट्स मुकम्मल तौर पे पूरी हो जाएं या उसी के पीछे लग जाते हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि नहीं, बल्कि आपने अपनी जो इनकम है उसको बल्कि ऐसे तरीके से डिवाइड करना है कि कुछ वो आपकी खाने पीने में लगे, कुछ सेविंग में लगे और कुछ से आप सदका करें, कुछ आखिरत के लिए सेव करें. तो इस्लाम बेसिकली इन कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है कि मुकम्मल सिर्फ अपनी जरूरियात ही के लिए जिंदगी जो है वो नहीं गुजारनी है. सही. इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूं सर. एक सेकंड में बख्तावर से पहले देख लो. शी हैज रेज्ड हर हैंड बिफोर यू. यस बख्तावर बोलिए. जी सर. सर यहाँ पर स्कैरसिटी का कॉन्सेप्ट इस्लाम में और इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा ऑपोजिट लिया जाता है. बेसिकली इस्लाम में तो कहते हैं ना कि इकोनॉमिक्स में जैसे कहते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और स्केर्स हैं, ठीक है, लेकिन इस्लाम में कहा जाता है कि किसी के भी इंसान के पैदा होने से पहले उसका रिज़्क अल्लाह ताला जमीन पे भेज देता है. जी बिल्कुल. तो ये यहाँ पर कह सकते हैं कि शैतान की तरफ से ओभाम से कहना चाहिए कि वहम डाल दिया गया है इंसान के दिल में कि ये चीजें अभी हैं लेकिन आगे जाके लिमिटेड हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी. तो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है. और स्केर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम में बिल्कुल ऑपोजिट है. और ये भी कहा गया है कि दुनिया जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए आपके लिए है, तो इसलिए इसके लिए अपनी वांट्स को भी ज्यादा मत बढ़ाएं. लेकिन यहाँ पर फिर मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट इंडल्ज होता है कि मार्केटिंग वाले फिर क्या करेंगे, क्योंकि उनका तो काम ही बेसिकली
नीड्स को मतलब जो होती नहीं है नीड्स उनको क्रिएट करना है। तो सही फिर यहाँ पर ये चीज जो है वो फिर मार्केट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो फिर वो चीजें वही हो जाएंगी कि दुनिया के लिए ये चीज अलग है, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। सही सही। और कोई जी हारिस आप क्या बोलना चाह रहे हैं? लास्ट पॉइंट देते हैं उनसे। सर मैं बेसिकली ये बात करना चाह रहा हूँ कि इस्लाम ने जो कंसेप्ट दिया है वो नीड्स और वांट्स को दोनों को अलग रख के दिया है। एक तरफ तो नीड्स का कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में कुरान पाक की आयत है कि वमामिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। दुनिया में कोई भी ऐसा जीरो चीज नहीं है, दुनिया के ऊपर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि जमीन को रोंदती हो, लेकिन उसका रिस्क जो है वो अल्लाह ने अपने पास लिख रखा है। मतलब ये कि जिंदगी गुजारने के लिए जितने वसाइल की उसको जरूरत है अल्लाह पाक को उसको नवाजेंगे। यहीं पे कुरान दूसरी जगह पे मैं ये भी बता रहा होता है कि जहाँ औलाद की बात की गई है कि अपनी औलाद को तुम खशियत इमलाक की वजह से कत्ल ना करो कि इनको पालूंगा कैसे, इनकी राइट परवरिश के लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां पे भी बता दिया कि रिसोर्सेज मैं प्रोवाइड करूंगा जिंदगी गुजारने के लिए। और सूरह फातिहा जो बार बार पढ़ते हैं उसकी भी शुरुआत यही अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के राइट। सारे आलमीन का पालने वाला तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। बेशक इसी बेशक। तरह दूसरी तरफ हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मिलती है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बॉक्स बनाया और उसके अंदर लाइन्स बनाई और उसके बाद एक लाइन बनाई जो कि उसकी बॉक्स से भी बाहर चली गई, जिसका पूरा कॉन्सेप्ट ये बताया गया कि ये जो लाइन है ना जो इस दायरे से बाहर जा रही है ये दायरा इंसान की जिंदगी है और ये लाइन इसकी चाहते और ख्वाहिशें हैं जो सही कि इसकी जिंदगी की तमाम तर मामलात से भी आगे निकल गई हैं। तो जहां तक नीड्स की बात है, जरूरियात की बात है, तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट उसके वाले से तवक्कुल का है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी करनी है और अल्लाह ने वो तमाम तर चीजें प्रोवाइड कर रखी हैं पहले से। और जहां पे बात आती है वांट्स की तो लाजिम बात है इंसान की ख्वाहिशात, चूंकि इंसान को जन्नत के मॉडल पे बनाया गया है जहाँ ख्वाहिशें बेपनाह होने वाली हैं, तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो ख्वाहिशात का एक मॉडल दुनिया में दिखाया है कि वहां तुम इस नौइयत की जिंदगी जियोगे कि सब कुछ वलकुम फिहा मा तश्तही अनफुसुकुम, कि वहां जो कुछ तुम्हारे जी चाहेगा वो तुम्हें मिल जाएगा, यहाँ सही नहीं मिल सकता। सही तो सही। ये एक इम्पोर्टेंट चीज थी जो मैं ऐड करना चाह रहा था। All right, thank you very much. Thank you very much. This is a good information that you have given to us, Haris. The thing is, like, and as the Mufti Sahab has also told us, of course, कि ज़ाहिर है कि दुनिया में ज़ाहिर है कि रिसोर्सेज आपके पास इतने नहीं है, लेकिन देखिए वैसे तो आप अगर वैसे आप इस्लामिक व्यू से देखें, जिस तरह हारिस भी बता रहे थे, and he was giving reference of different ayahs and different kind of the instances from the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that the resources are not limited according to Islam. Allah basically is so much benevolent, and he has given and he has provided sufficient रिसोर्सेज। अब देखें अगर आप दुनिया के जो वर्ल्डली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन अगर आप नासा को देखें तो वो ये बताएगा आपको कि हम अभी दुनिया का बहुत ही कम एक्सप्लोर कर सके हैं। whatever is hidden in this world and universe cannot be explored। दुनिया में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और ज़ाहिर है उसके जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड हैं जो कि अल्लाह ने रखे हुए हैं। लेकिन ये मैक्रो लेवल की बात है। माइक्रो लेवल पे वी आर एक्चुअली लाइक जिस तरह अल्लाह आजमाता है, किसी को रिसोर्सेज दे के किसी को रिसोर्सेज ना दे के। अगर आप जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम जस्ट रॉन्ग एट एनी प्लेस फ्रॉम द इस्लामिक पर्सपेक्टिव, तो बेसिकली ज़ाहिर है कि अल्लाह जो है वो ज़ाहिर है रिसोर्सेज आपको टाइम जो है जिंदगी का लिमिटेड दिया हुआ है। रिसोर्सेज देना या ना देना ज़ाहिर है ये अल्लाह का एक निज़ाम है कि अल्लाह ने जो है वो कितने रिसोर्सेज आपको देने हैं। जिसको रिसोर्स देता है उसको रिसोर्स दे के जो है वो उसका एग्जाम उसको जो है वो टेस्ट करता है, और जिसको रिसोर्स नहीं देता उसको रिसोर्स ना देके टेस्ट करता है। बट एनीवे द थिंग बेसिकली इज दैट इंडिविजुअल्स अगर माइक्रो लेवल पे देखें तो रिसोर्सेज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेड हैं, लेकिन मैक्रो लेवल पे लिमिटेड नहीं है। यूनिवर्स में जितने भी अल्लाह के खजाने हैं वो बेइंतहा हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल व्हेन यू लिसन टू अबाउट द एनिमल्स ऑफ जन्ना एंड दीज ऑल लाइक द अल्लाह बेसिकली हैज गॉट लाइक वो बहुत बड़े बड़े ज़ाहिर है। अब आप देखें कि एक शार्क है समंदर में, एक एलिफेंट्स हैं दुनिया के, कितने कितने किलो वो सब रोजाना खाना खाते हैं। अल्लाह बेसिकली fulfills everybody's wants and everybody's actually like Allah has got unlimited resources, but of course the resources given to us for a certain time period and for our life actually are not unlimited. That's what basically is the concept of scarcity in Islam, and you perhaps know better about this. So here we end the first lecture.